यार जो गोटे साइड रे आसे सेटा आसु सेपट ये ना ना सेटा नो टूलटा नो गोटे साइड रे आसे चेंज करिया को माने बोर्ड सहित चेंज करिया को जो ब्लैक बोर्ड सहित एटा रहुची तो एमती सेपटे कला वाला को सुविधा होगे ठीक है Good evening, everyone. Am I audible? Hello. Okay. Maybe not this. Okay. So, good evening, everyone. Today we are going to have the second session of geography MCQ discussion. Okay, but before that we have a great announcement. Our new OCS Prelims batch is starting from 19th January. Okay, so केही भी जदि interested अच्छा, I think you should take the classes. Prelims ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ beneficial ହବ. You can contact on this number 977 646 4 2. Okay, so contact this number to get the best civil service guidance. Okay, now आम हमरो डिस्कशन को स्टार्ट करिबा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा. लाइक लास्ट टाइम हमें कोन करिया, मो क्वेश्चन पढिबी, देन 5 सेकंड्स पॉज देबी, देन यू गाइस लाइक देन वी विल डिस्कस. ता भितरे जो माने अच्छा ऑनलाइन लाइव रे अच्छा, they can answer the question. Okay, so first question is, consider the following statements in the context of minerals and rocks. Okay, a rock is an aggregate of one or more minerals. Minerals are solely formed by inorganic processes. Okay, divergent boundaries on continental crust can create mineral deposits. Divergent boundaries can create mineral deposits. Okay, so take 5 seconds, try to answer. Okay. Good evening, Iconic India. Okay, so हमें आंसर डिस्कस करिया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. सो एटी कोन कहूची जे लेट्स अज्यूम कि एटा हो जोटा रॉक. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रॉक रे डिफरेंट टाइप रो मिनरल्स अछि. ओके, तो स्टेटमेंट होची एटा जे गोटे रॉक रे हमें मल्टीपल टाइप रो जिंस पाइबा. ओके, मल्टीपल टाइप रो मिनरल पाइबा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, कहेंगी टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन ओर. ओके, आमे जतबेले आयरन ओर टा आणुछे, इज दैट अ प्योर मिनरल? आमे जो आयरन ओर जोटा आणुछे, ओर टा कोन गोटे रॉक. रॉक से हॉलीवुड वाला रॉक नो. ओके, सो आयरन ओर टा गोटे रॉक. आयरन ओर भितरे आयरन सहित
मल्टीपल अदर जिनस भी रोची जोटा को कि आमे इम्प्योरिटीज हिसाब रे काढुचे थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग करके आयरन आउ स्लैग को अलगा करके आयरन रो आमे स्टील स्टेनलेस स्टील डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनौचे ओके तो से जो इम्प्योरिटीज बाला ता धरे भी मल्टीपल डिफरेंट मिनरल रहबो सल्फर रो किछटा कंपाउंड रहबो कार्बन रो किछटा कंपाउंड रहबो किछटा इम्प्योरिटीज भी रहबो तो से सब मिसी की रहउची गोटे रॉक भितरे so the first statement is correct okay then second statement minerals are solely formed by inorganic process अच्छा आइकॉनिक इंडिया को कोल गोटे रॉक ना नहीं लैग रोची की so कोल आमे कंसीडर करछे गोटे रॉक ओके इट इज अ रॉक नाउ कोल रो केमिति को प्रोसेस रे कोल बनुची गोटे बड़ एरिया रे बहुत सारा प्लांट्स एंड ट्रीज से माने सबसाइड हे गले एंड ता ऊपर सेडिमेंट्स वगैरह आसी कवर कर दे की हाई प्रेशर आउ हाई टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट कला जो थरे की मेटामॉर्फोसिस है की हमें पाउचे कोल सो ऑर्गेनिक कंपाउंड रू कोल बनला सिमिलरली ओशन बॉटम रे और ओशन बॉटम भी छाड़ दियो हमर कोस्ट पाखे रे हमें देखुचे कोरल रीफ्स राइट से कोरल रीफ्स गुरा केमति बनची जूजेंथले राइट से माने कैल्शियस सिक्रीशन करी की कोरल रीफ्स बनौचंती तो सेटा भी गोटा ऑर्गेनिक प्रोसेस हला ना नहीं सो दिस इज द स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट सो एतिकी रु ही हमें आंसर पाई गले एलिमिनेशन प्रोसेस टू रॉन्ग माने हमको कौन पचारची करेक्ट आंसर सो टू रॉन्ग माने ऑप्शन ए कटि गला बी कटि गला एंड डी भी कटि गला सो हमरा आंसर ऑप्शन सी आसी गला बट स्टिल देखियो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर ऑन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट can create mineral deposits now divergent boundary माने कौन so continental crust कहला एठी हमर प्लेट टेक्टोनिक्स रो कांसेप्ट आसी गला राइट डाइवर्जेंस माने कौन मूवमेंट को डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन टेंशनल फोर्स लागिवो दीटा का प्लेट निजटू दूरीबे और प्लेट गोटे प्लेट अंडर जदी होची से प्लेट ऊपर टेंशनल फोर्स लगी कि रिफ्ट क्रिएट होबो ना हमें अज्यूम कर दो रिफ्ट क्रिएट हो जाई सब किछि हो जाई कंप्रेस टेंशनल फोर्स ओके नाउ तळे मैग्मा रो मूवमेंट एमती होची बोली क्रस्ट ऊपर टेंशनल फोर्स लगला तो एठी जो क्रैक क्रिएट होबो एठी कोन होबो मैग्मा ऊपर को उठिबो एंड मैग्मा रे बहुत सारा मिनरल्स अछि अर्थ रा इंटीरियर ता बहुत सारा मिनरल को नै की बनी छी एडा अर्थ रा इंटीरियर रे पडिथिबो तमे राइट सो जेताबले मैग्मा ता मेल्ट हे की ऊपर को जाउची लावा बनी की देन ऊपर सेटा डिपॉजिट होउची तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डाइवर्जेंस रे हमें कौन पाइले मिनरल डिपॉजिट्स ओके सो स्टेटमेंट 3 हमें जो देखथिले दैट वाज करेक्ट ओके नाउ हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कौन सी क्वेश्चन रे which of the following is or are the evidence in support of the continental drift theory okay continental drift theory रो एटा भितरु कोटा होची सपोर्ट एविडेंस फर्स्ट वन इज रिच प्लेसर डिपॉजिट्स of gold in Ghana okay
Then second statement, Gondwana system of tillite sediments found in land masses of northern hemisphere. Okay. Third statement, rock of the same age across the oceans. Okay. Now answer दो चेष्टा करो. So iconic answer कौन होगा? Okay. Now first हमारा क्वेश्चन को कहा ऊपर अछि एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके टिके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विषय रे कथा हिजिबा. So continental drift theory was given by Alfred Wegener. Okay 1912 1912 रे in 1912 German meteorologist Alfred Wegener, he gave the continental drift theory CDT. Okay now तांको कहवा हिसाब रे थिला जे around 250 million years ago, around the early Mesozoic era, this is also called as early Triassic period. Okay सही रेंज रे कौन हितला ना हमरो एंटायर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ से माने गोटे सुपर कॉन्टिनेंट हेकी थिले. तो एटा जदी अर्थ हला तार सबु कॉन्टिनेंट गुराको सबु लैंड मास गोटे सुपर कॉन्टिनेंट हिसाब रे थिले जोटा को होतला पैंजिया. एंड सबु कॉन्टिनेंट जदी एकाठी असंती सबु वाटर भी एकाठी थिबो, ओशन गुरा के डिवाइड ही नथिबो, ईच ओशन मझिरे हमें लैंड मास पाइबानी. राइट तो and the mega ocean was called as Panthalassa. Okay now से कहले जे 250 million years ago for two forces, okay for multiple forces there was two types of movement that was created. गोटे होची westward movement ଆଉ ଗୋଟେ होची equatorward movement. Okay so ए दिटा का मूवमेंट हबा जोगु कोन हला ना ए दिटा का मूवमेंट रो इन्फ्लुएंस रे this Pangea it broke into two pieces. गोटे होची Laurasia also known as Angara land and the other one is Gondwana land. Okay and ए दिटा करो रिफ्टिंग स्टार्ट हला भांगी की सेपरेट ही नथले रिफ्टिंग स्टार्ट हला सेपरेट हेले आउ 20-30 मिलियन इयर्स परे देन से जो रिफ्टिंग क्रिएट हला ता मझिरे कोन हला ना हमें गोटे नुआ सी देखिया को पाइले ए एरिया रे.
and this was called as Tethys Sea. Okay, and over the period of time आमे जो प्रेजेंट सिनेरियो देखुचे डिफरेंट कॉन्टिनेंट रो ए रीजन रे आमे पाइले नॉर्थ अमेरिका, एठी आमे पाइले साउथ अमेरिका, एठी आमे पाउचे आफ्रिका, ए एरिया रे आमे पाउचे यूरेशिया रीजन, एठी इंडिया अछि एंड एठी ऑस्ट्रेलिया अछि, राइट। अप्रोक्सीमेटली मु बहुत भलो ड्राइंग करे, पिकासो लेवल रो आर्टिस्ट मु, सो तुम जानि परथु। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन रे आसी पहुंचला तो सी थ्योरी तो देदेले, खाली थ्योरी कहि देले तो हबन। मु कहबी जे मु होची अर्थ रो सुप्रीम लॉर्ड, सेटा तो हबनी ना, मु एविडेंस दबा दरकार। मु समस्तिंग ऊपर पावर एक्सरसाइज कर परथि, मु समस्तिंग विषय रे जानि परथि, मु निजको गॉड भलिया प्रेजेंट कर परिबी, से भलिया एविडेंस दबा पड़ियो। मु कामेहामेहा कले गोटे एनर्जी ब्लास्ट हबो, राइट। सो प्रूफ दरकार, स्टेटमेंट खाली कह देला हबनी, प्रूफ दरकार। तो सेथि पई से मल्टीपल प्रूफ्स देथिले। गोटे प्रूफ थिला फॉसिल एविडेंसेस। फॉसिल एविडेंस रे आमे दीटा टाइप रो फॉसिल पाया, गोटे होची एनिमल फॉसिल्स, गोटे होची प्लांट फॉसिल्स। प्लांट रे से गोटे एग्जांपल देथिले ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन। एनिमल रे लेमुर्स एंसेस्टर्स, फॉसिल आ गोटे थिला मेसोसॉरस तार फॉसिल, एंड एमती मल्टीपल अदर एनिमल्स भी थिले। ओके, सो एटा गोटे एविडेंस दिखले जे से कहले जे सबु ए एनिमल आ ए प्लांट रो फॉसिल अनरिलेटेड एंड वेरी फार अवे कॉन्टिनेंट्स मानंगरे मिलुछ, सेटा गोटे एविडेंस थिला। आ गोटे एविडेंस थिला प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। एटा कोन कहले, से कहले जे नाउ प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड बेसी डिटेल जानिया दरकार नहीं, बस एति जानता जे गोटे टाइप रो गोल्ड माइन क्रिएट हेछि गोटे जगह रे। तो प्लेसर डिपॉजिट हमको मिलथिला घाना कोस्ट रे, बट तार सोर्स ता अछि ब्राजील रे। तो ब्राजील आ घाना बहुत दूर अछंती, समुद्र भितर भी चेक करि परिबा, किंतु सेठी हमको किछि कनेक्टिव रास्ता मिललानी। सो सी कहले जे ब्राजील आउ घाना कोस्ट से माने आगुरु जोड़ी हेकी थिले। ओके, सिमिलरली आउ कोन एविडेंस दिखले से सेम एज rocks in different continents. The same South America, Brazil region, आउ सेम वेस्ट अफ्रीका घाना कोस्ट रीजन, सेही एरिया रे जेतबळे आमे रॉक रो कार्बन डेटिंग करले सेतबळे जणा पड़ला जे दीटाकर एज सेम, दीटाकर कंपोजिशन एनालिसिस करले दीटाकर कंपोजिशन सेम। सो से कहले जे एटा होची गोटे एविडेंस। नेक्स्ट सी एविडेंस कोन देले, कहले सिमिलर जियोलॉजिकल फीचर्स हमरो नॉर्थ अमेरिका रे गोटे माउंटेन रेंज अछि एपेलेशियन माउंटेन। ओके, सेटा स्कॉटिश हाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, तो से स्कॉटलैंड रे गोटे अछि स्कॉटिश हाईलैंड। ता ऊपर को हमें गले देखिया को रीजन टा स्कैंडिनेविया रीजन टा, तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी ऑल दीज थ्री माउंटेन्स दे हैव, तो से कहले जे
all three mountains were once connected like this, but because drift happened, एटा भांगी के appellation हे गला अमेरिका रे, एटा भांगी की स्कॉटिश हाईलैंड हे गला, एटा भांगी की स्कैंडिनेविया हे गला. Okay, then what other evidence did he give? Jigsaw fit of the continents. So हमें देखिवा ब्राजील साइड ऑफ साउथ अमेरिका एमती अछि एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एमती अछि. ओके, वेस्ट कोस्ट एमती अछि तो हमें जदी एटा ठीक लगेबा अपेरेंटली सेटा फिट हे जिवो, and that was one of his evidences. Okay, now चलो क्वेश्चन को वापस जीवा. So first evidence, rich placer deposits हमें डिस्कस कर ले, that is correct. Okay, this I did not talk about. So आउ गोटे सी एविडेंस देखले सेटा होची टिलाइट डिपॉजिट्स. Okay, now टिलाइट डिपॉजिट कौन? This is associated with glacial landforms. Okay, glacier देखो एटा तो तमे डेली लाइफ रे भी ऑब्जर्व करथुओ जे तम घरु गोटे छात ऊपर पानी जमा न होबो बोली गोटे एमती पाइप बाहर कर देता छात ऊपर, एठु एमती पानी तळକୁ पडिवो तो रेगुलरली से जगह रे पानी पडुची एंड फ्लोर जो रास्ता ऊपर हो किबा तम घर फ्लोर रे हो जो जगह रे पानी पडुची से जगह रे इरोजन होची, पानी जोगु इरोजन हला, विंड जोगु इरोजन हुए, हमें एगुरा कहूचे इरोजनल एजेंट्स और जियोमॉर्फिक एजेंट्स. सिमिलरली ग्लेशियर पई भी इरोजन हुए. ओके, एंड दिस ग्लेशियर इट क्रिएट्स सम डिपॉजिट्स. देखो तो गोटे माउंटेन टॉप हला ता ऊपर एमती ग्लेशियर फ्लो हे की जीवो एंड ए रीजन रे लेट्स से कि हमरो ओशन अछि तो ग्लेशियर ता ओशन पाखु गले आइसबर्ग हबो, टाइटैनिक आइसबर्ग माडा हला बुडी गला, राइट. तो आइसबर्ग हे की भांगी जीवो ए पॉइंट पर्यंत पूरा माउंटेन टॉप रु टिल द पॉइंट जोटी की ग्लेशियर ता भांगी जाउची कि मेल्ट हे जाउची से पॉइंट पर्यंत ग्लेशियर विल कंटिन्यू इरोडिंग द क्रस्ट. ओके, लिथोस्फीयर को इरोड करूथुवो एंड से इरोजन परे ए ओशनिक हमरो ओशन कोन कहबा कोस्ट पाखरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर से डिफरेंट डिपॉजिट्स आनी के दिए. ओके, इरोजन हला देन डिपोजिशन हबो, सेडिमेंटेशन हबो, से जो सेडिमेंट्स गोरा का आसी सेटा को हमें कहूचे टिलाइट्स. ओके, एंड ओवर टाइम गोटे लेयर ऊपर आउट लेयर पड़ला, आउट लेयर पड़ला, आउट लेयर पड़ला तो कंप्रेशन हबो. तमे जदी गोटे बही तमरे हातडा रखलो तापरे फर्स्ट गोटे बही रखलो प्रेशर बेसी पड़िबोनी, आ गोटे बही रखलो टिके प्रेशर बढ़िबो, आ गोटे बही रखलो प्रेशर बढ़िबो तो हातडा तमरो कंप्रेस हला भलिया फील होबो ना नहीं, प्रेशर बहुत बढ़िबो. सिमिलरली सेडिमेंट गोरा करो तळ लेयर ऊपर प्रेशर बढ़िबो बिकॉज़ ऊपर लेयर बढ़ी बढ़ी चलची. एज अ रिजल्ट हमें पाइबा सेडिमेंटरी रॉक्स. सेटा होची गोटे टाइप रो रॉक जोटा कि एमती कंप्रेशन ही गोटे रॉक रे कन्वर्ट हो जाए सॉइल टा. ओके, से जो टिलाइट डिपॉजिट रो रॉक पाउचे हमें that is associated with the Gondwana system of rocks of India and तार कनेक्शन रे हमें साउथ हेमिस्फीयर रे बहुत सारा पाउचे अदर लोकेशन जोठी की सेम गोंडवाना सिस्टम रो टिलाइट डिपॉजिट हमें पाउचे. सो हमो क्वेश्चन रे कोन कहिची नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे हमें पाउचे but that should be southern hemisphere. So second statement is incorrect. Then rock of the same age across the ocean, it I am discuss kar le. So statement 3 be correct. So answer will be option B. Okay, now next question ko jiba. Consider the following statements about the sedimentary and metamorphic rocks. Sedimentary rock विषय रे हमें बे जस्ट कथा होतले तो स्टेटमेंट देखिया कोन अछि metamorphic rocks are formed from heat and pressure.
and sedimentary rocks are formed from compaction and cementation. Okay. Then next statement, metamorphic rocks contain fossils whereas sedimentary rocks are devoid of the same. Now answer दियो 5 seconds नहीं की. ओके सो आंसर देखिए कौन आम डिस्कस कौन कले सेडिमेंटरी रॉक केस रे प्रेशर बढ़ुची गोटे ऊपर गोटे तो ता जो कौन होची जो प्रोसेसटा होची सेटा को आमे कहूचे कंपैक्शन कंपैक्ट पूरा करछ तमे जतबळे लेट्स से माटी रे गोटे बॉल कलो कि स्नो बॉल जो बनावे सेटा जते तमे कंपैक्ट करबो सेते हार्ड होबो राइट तो से बर्फ का गोला चुस्की सेडार भी धरि पार तो सेटा से कौन करे एमती हाथ रे एमती चापी 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 टाइट करे सो दैट कंपैक्ट हे कि से गोटे सॉलिड हे कि रहइबो ब्रेक अपार्ट हबनी सेम जिंसटा को हमें कहूचे कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन and this is the process through which sedimentary rock is created. In case of metamorphic rock, metamorphosis meaning कौन सी निजर फॉर्म को चेंज करूछ एंड से फॉर्म को चेंज करिया को दीटा एजेंट नेसेसरी गोटे होची हीट गोटे होची प्रेशर एंड बोथ शुड बी वेरी हाई. आमे जो लावा देखुचे से केस रे कौन होची बहुत ही अधिक टेम्परेचर रहउची एंड गोटे लावा छाड़ी दियो सेम जो आमे एग्जांपल नेथले स्टार्टिंग रु आयरन ओर रो एग्जांपल नबा आयरन ओर टा गोटे फॉर्म रे अछि ताको आमे बहुत हीट देले ताको मेल्ट कर देले तादरु सेपरेशन ही गला स्लैग ऊपर को उठी गला स्लैग टाको आमे फिल्टर करी काट देले आउ प्योर आयरन मोल्टेन आयरन को आमे सेपरेट कर देले देन तादरे मिक्सिंग करी जा प्रोसेसिंग करियार अछि से अलगा रहला तो सेही जिंसटा जो होची सेटा को आमे देखो एटा बहुत क्रूड एग्जांपल एटा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नुह मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस रे कोन हो जेमति हमरो कार्बन रु और ग्राफाइट रु आमे पाउचे कोल रु डायमंड पाउचे सेटा होची मेटामॉर्फोसिस हला ओके दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट कोन मेटामॉर्फिक रॉक्स कंटेन फॉसिल्स नाउ आमे फॉसिल केतबळे मिलिबो जेतबळे गोटे लेयर भितरे मल्टीपल लेयर भितरे गोटे एनिमल किबा प्लांट रो डेड बॉडी प्रिजर्व ही कि रहइबो लेयर भितरे रहइबो मेटामॉर्फिक रॉक रो तो लेयर नाही कार लेयर अछि सेडिमेंटरी रॉक हमें डिस्कस कर लेयर ऊपर लेयर पडुची तो गोटे लेयर पडिची ता ऊपर गोटे एनिमल मरि पडी गला ता ऊपर मल्टीपल लेयर्स आसी गला एंड सेठी से प्रिजर्व हे गला ड्यू टू अदर फैक्टर्स एज वेल ओके तो सेठी हमें फॉसिल पाइबा नॉट इन केस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स जेहेतु बहुत अधिक टेम्परेचर आ प्रेशर अंडर रे आसंती फॉसिल थिले भी सेटा जळि जिवो ओके हमें फॉसिल टा पाइबानी इट विल नॉट बी प्रिजर्व्ड ओके सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो आंसर विल बी ए हमहु करेक्ट पचारची एडा ऊपर नजर रखथुओ करेक्ट कि इनकरेक्ट ओके सो हमर आंसर विल बी ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Cocos plate is up between Central America and Pacific plate, South America and Pacific plate, Red Sea and Persian Gulf, Asiatic plate and Pacific plate. तो एटा वर्ल्ड मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन गोटे कहि पारो और प्लेट टेक्टोनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन कहि पारो दीटा कर आसीबो ओके सो आंसर कोन होबो okay so okay
एटा होची नॉर्थ अमेरिका, एटा होची साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका रो प्लेट टा एमती अछि, साउथ अमेरिका रो प्लेट टा एमती अछि। ओके एंड ए रीजन रे हमें कोन देखिया पाउचे, वेस्ट ऑफ द टू अमेरिकास पैसिफिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन रो गोटे बहुत बड़ पैसिफिक प्लेट अछि, ठीक अछि। तो सेई जो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट रहिला सेई दीटा कर मार्जिन रे हमें गोटे ए रीजन रे नॉट साउथ अमेरिका हमें नॉर्थ अमेरिका और ए रीजन रे हमें पाउचे। ओके नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशन मझरे कोकोस प्लेट पाउचे, ठीक अछि। सो द आंसर विल बी ओके सेंट्रल अमेरिका दीजिए तो ए रीजन रे हमें पाउचे जेतु एटा को हमें सेंट्रल अमेरिका भी कोचे, सो आंसर विल बी सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। ओके नाउ ऑप्शन में जदी नॉर्थ अमेरिका देई थांदा देन दैट वुड हैव बीन आल्सो करेक्ट। तमे सेंट्रल अमेरिका ऑप्शन में अछि, सेंट्रल अमेरिका इज मोर एक्यूरेट, बट जदी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट देई थांदा देन दैट विल आल्सो बी करेक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। अच्छा ये जो प्लेट रिलेटेड थ्योरी टाकू कौन कहती कमेंट रे कहबो, ठीक अछि सेटा कोन आउ किए देइथिले। ओके से थ्योरी टा किए प्रपोज करथिले एंड से थ्योरी रो नाटा। ओके नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो हमरो सॉइल फॉर्मेशन रो डिफरेंट फैक्टर ऊपर क्वेश्चन पचार छी तम पय आ गुटे क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एटा को कौन कहती। ओके कमेंट रे लिखियो। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज पेरेंटल मटेरियल, टोपोग्राफी एंड वेदरिंग, क्लाइमेट, सॉइल टेक्सचर। को फैक्टर टा अफेक्ट करे नहीं ओके इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो डिस्कस करिया। नाउ तो फैक्टर्स affecting soil formation। ओके फर्स्ट फैक्टर होची पेरेंट रॉक। सॉइल टा कोठू फॉर्म होची रॉक भांगी की रॉक गुंड हैला पर रॉक रो इरोजन हबो, वेदरिंग हबो, देन इरोजन हबो, देन से इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट हबो, सेईटा सेई प्रोसेस रे ही रॉक रु सॉइल क्रिएट होची। तो पेरेंट रॉक जो थ्रू सॉइल टा बनियो सेटा ही तार फैक्टर हबो गोटे पेरेंट रॉक। आमे जदी लाइमस्टोन रु सॉइल बनेबा तार प्रॉपर्टी डिपेंड करिवो लाइमस्टोन ऊपर। जदी आमे आयरन ओर रु सॉइल बनेबा तार प्रॉपर्टी डिपेंड करिवो आयरन ओर ऊपर। आमे जदी कोल रु सॉइल बनेबा तार प्रॉपर्टी डिपेंड करिवो कोल ऊपर, राइट। देन नेक्स्ट फैक्टर कोन हबो, नेक्स्ट फैक्टर कौन होगा, नेक्स्ट फैक्टर इज बायोटा। बायोटा माने ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स केमिति अफेक्ट करछन से रीजन रे अधिक प्लांट्स अछि जदी
से रीजन रे पत्र झड़िबो, राइट, प्लांट्स मानकर पत्र झड़िबो, तादरू फूल भी झड़िबो, फल भी झड़िबो, दैट विल क्रिएट मोर बायोमास इन द सॉइल। से एरिया रे डिफरेंट गोटे एरिया रो सॉइल रे बहुत सारा अर्थवर्म अछंती, से एरिया रो सॉइल रे बहुत एरेशन हबो। अर्थवर्म फ्रेंड ऑफ फार्मर, राइट, तो सी कौन करिवो सॉइल रो फर्टिलिटी बढ़ेबो, फर्टाइल सॉइल हमें पाइबा से रीजन रे। सो बायोटा गोटे फैक्टर हला। देन नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट रे हमरो कोन कोन आसीबो, क्लाइमेट रे आसीबो टेम्परेचर आउ प्रेसिपिटेशन। ओके, केते अमाउंट रो वर्षा होउची, वर्षा हेले सेठी टॉप सॉइल टा धोई हे जिवो, वर्षा जदि बहुत जोरे हबो से टॉप सॉइल सहित सब सॉइल भी धोई कि हमरो पूरा फर्टिलिटी पळेबो, बैडलैंड्स क्रिएट हे जिवो। टेम्परेचर अधिक रहिले सॉइल रु मॉइस्चर पळेबो, पवन आसले इजीली उडी की पळेबो कोठी डेजर्ट रीजन, राइट, तो क्लाइमेट भी अफेक्ट करे। देन नेक्स्ट फैक्टर कौन हबो, नेक्स्ट फैक्टर इज पेरेंट रॉक बायोटा क्लाइमेट। टाइम, ओके, केते टाइम हेलानी से सॉइल टा बनिछि, ओके, सो दैट आल्सो अफेक्ट्स द नेचर ऑफ द सॉइल। केमिति अधिक टाइम हेलानी जदि सॉइल टा बनिछि ताकू टाइम मिलिबो, तादरे डिफरेंट बायोटिक मटेरियल ऐड होबो, जोडा को हमें कहूचे बायोमास, ह्यूमस जोडा को कहूचे। देन तादरे डिफरेंट बायो ऑर्गेनिजम्स जेमति अर्थवर्म वगैरह आसीबे, से माने विथ टाइम सॉइल टा को आउरी फर्टाइल करिवे, सॉइल पार्टिकल को आउरी ब्रेक डाउन करिवे, आउरी फाइन करिवे, तादरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल आसी मिसिबो। वर्षा हेले मे भी धोई हे जिवो, बेसी टेम्परेचर हेले सुखी जिवो, बाली बनी जिवो, राइट, तो टाइम सहित डिफरेंट टाइप रो फैक्टर ऐड हे जिवो तादरे। तो टाइम भी तार सॉइल रो नेचर को डिटरमाइन करे। ओके, जिबा हमें वापस क्वेश्चन को। सो पेरेंटल मटेरियल हमें देखिले, दिस इज करेक्ट। टॉपोग्राफी एंड वेदरिंग, नाउ टॉपोग्राफी एंड वेदरिंग रो भी गोटे फैक्टर रहबो। टॉपोग्राफी माने कोन, से एरिया रो फीचर सब कोन अछि, सेडा स्लोप अधिक अछि कि स्लोप नाही, जमा प्लेन एरिया, तो स्लोप अधिक थिले कोन हो, अल्प वर्षा हेले भी सब माटी धोई जिवो जदी गछ नथिवो सेठी, राइट, बट प्लेन एरिया रे सेडा एते इजीली हबनी, से टाइप रो अफेक्ट करियो। आ वेदरिंग दैट इज रिलेट, देखो जे वेदरिंग प्रोसेस टा जदी अधिक होउथबो से रीजन रे, देन सेठी सॉइल फॉर्मेशन टा बहुत जल्दी हबो। वेदरिंग जदी कम होउथबो सॉइल फॉर्मेशन टा स्लो हबो। ओके, सो दिस आल्सो इज करेक्ट। क्लाइमेट हमें देखले टेम्परेचर और रेनफॉल। सो सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर टा होची सॉइल रो गोटे प्रॉपर्टी, ना कि गोटे फैक्टर जोडा ताको अफेक्ट करे। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। हमको कौन पचाची, नॉट अ फैक्टर, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, सॉइल टेक्सचर। ओके, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। Now, in the neighborhood of Aleutian Islands in the Pacific Ocean and between Greenland and Iceland in the Atlantic Ocean, low pressure centers are found due to which pressure belt? Okay, so pressure belt related question, climatology ro. Equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, polar high pressure belt, तो कोडा को ऑप्शन टा ठीक अछि को। ओके, yes, Monica Nayak, your answer is correct. Soil texture was the answer for the previous question. A question answer को
बहुत ही ज्यादा लैक हो। ठीक अच्छे तुम आंसर दियो निजे निजर आंसर रो ट्रैक रखो। ओके ए आंसर टा एमती नंबरिंग कर दियो। क्वेश्चन 1 आंसर ठीक रहिला तो +2 आंसर जदी भूल रहिला क्वेश्चन 2 रो कोन करियो -0.67 तो एमती करके टोटल जतिटा क्वेश्चन हम डिस्कस करियो आउट ऑफ सेटारू केते स्कोर रखला निजे ट्रैक कर। ओके एंड जोटा भूल करछो सॉल्यूशन टा भल से सुनो जोटा ठीक करछो सेटार भी सुनो किछटा एक्स्ट्रा पॉइंट पाई परियो तुम। ठीक अछि नाउ ए जो अल्यूशियन आइलैंड्स एटा होची गोटे चेन ऑफ आइलैंड्स बिटवीन द कामचाटका प्लेटू ऑफ और कामचाटका पेनिनसुला ऑफ रशिया and Alaska of the US of A, that is USA, United States of America. तो ये जो अल्यूशियन आइलैंड टा ए ता पाखर ए नेबरहुड रे जो ओशन रीजन रहला सेडा सिकुच पैसिफिक ओशन रो रीजन एंड दिस रीजन इज अराउंड द 60 डिग्री टू 65 डिग्री बेल्ट। ठीक अछि सिमिलरली ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड नॉर्थ अमेरिका रो ईस्ट कोस्ट साइड रे अछंदी सेडा सेम 60 डिग्री टू 65 डिग्री रेंज रे अछि। तो सेही रेंज रे हमें को प्रेशर बेल्ट टा पाउचे इक्वेटोरियल पाइबा नहीं एटा 0 डिग्री सब ट्रॉपिकल एटा अराउंड 30 डिग्री पोलर 90 डिग्री तो आंसर कोन हो सब पोलर जोटा हमें पाउचे अराउंड द 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो ए रीजन रे हमें कोटा पई लो प्रेशर देखुचे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ओके एथिरे भी तमे बहुत इजी तमे जदी लोकेशन भी जानना तमे बहुत इजीली डिटरमाइन कर परियो। अल्यूशियन आइलैंड रो लोकेशन जानना से आइसलैंड और ग्रीनलैंड रो लोकेशन तो जानचो नॉर्थ रे कोठी ओटा अछि से 90 डिग्री रे अछि कि 80 रे 70 रे 60 रे सेटा तमे जानना तो तमको कोन पचरछि लो प्रेशर सेंटर तो ऑप्शन रे दीटा ऑप्शन रे कोन दिछि हाई प्रेशर बेल्ट रे लो प्रेशर सेंटर केमति आसीओ तो ए दीटा को एलिमिनेट हे गला। नाउ इक्वेटर थोड़ी ना हायर लैटिट्यूड रीजन एटा तो पूरा 0 डिग्री राइट सो एटा भी एलिमिनेट हे गला इजीली आंसर तमे पाई गलो ऑप्शन सी। ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नाउ consider the following statements about the mineral distribution in India. Okay, India is the largest exporter of iron ore in the world. Karnataka has very rich deposits of high grade iron ores. Which of the following are correct? So answer को okay discuss करिया। So first statement India is the largest exporter of iron ore. Now it is not correct. Okay, largest exporter of iron ore in the world is Australia जी की नियरली 54% ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट इंटरनेशनल आयरन ओर ट्रेड रे 54% शेयर ऑस्ट्रेलिया एका धरछि। ठीक अछि देन इंडिया रे पोजीशन कोन इंडिया इज इन द 7th प्लेस। नाउ माइंड गोटे जिंस तुमको एग्जाम रे जदी एठी क्वेश्चन टा टिके डिफरेंट हितांदा आंसर अलगा ही हितांदा। ठीक अछि आंसर एठी ऑस्ट्रेलिया न है कि एठी चाइना है हितांदा कोन क्वेश्चन हितले एक्सपोर्टर जगह रे प्रोड्यूसर हितले आंसर चाइना ही हितांदा। अगेन आउ गोटे जिंस चेंज हे जिवो आयरन ओर जगह रे हमें जदी आयरन एंड स्टील कर दवा ता देरे ऑर्डर टा भी चेंज हे जिवो ऑस्ट्रेलिया रही बनी टॉप एक्सपोर्टर। तमरा होमवर्क होची तमे फाइंड आउट करिवो लार्जेस्ट टॉप 5 प्रोड्यूसर्स किए से ऑफ आयरन ओर टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर एंड टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ आयरन एंड स्टील एटा होची तमरा होमवर्क एटा करी की रखिबो निज नोट रे मेंशन करी
एग्जाम रे आसी परिवो then next statement so first statement is incorrect next statement Karnataka has very rich deposits of high grade iron ores this is actually correct ame को region रे पाउचे कर्नाटक रा बाबा बुदान हिल्स चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट रे okay so Baba Budan Hills has very rich deposits of high grade iron ore now high grade low grade कोन गोटे होची high grade रे कोन जीवो मैग्नेटाइट आउ हेमाटाइट राइट सुनिथिबो पिलाळे मैग्नेटाइट हेमाटाइट सिडेराइट एगोरा सुनिथिबो तो मैग्नेटाइट आउ हेमाटाइट होची हाई ग्रेड सिडेराइट होची लो ग्रेड ओके तो हमारा आंसर कोन हो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट आंसर हो कोन पचाची करेक्ट सो ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा so the red soil of India has been formed due to the weathering of brown forest soil in areas of low rainfall, sandstone and quartzite in areas of high rainfall, crystalline igneous rocks in the area of low rainfall, shell and limestone in areas of high rainfall. तो आंसर कौन होगा? So our answer here will be option C. Okay. Crystalline igneous rocks. So हमरो जो red soil टा रहउची सेटार नेचर होची टिके बडो ग्रेन्स रही बडो ग्रेन्स केता बळे हबो जेता बळे रॉक पार्टिकल्स रो साइज बडो रहइबो एंड एटा कोन डिटरमाइन करे स्पीड ऑफ कूलिंग तो इग्नियस रॉक जोड़ा एटा स्लोली कूल हुई एंड ये जो स्लो कूलिंग जगू क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाए रॉक एंड से क्रिस्टलाइन गुराक बड़ बड़ ग्रेन रे कन्वर्ट हो जाए एंड दैट ग्रेन रिजल्ट्स इन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस इग्नियस रॉक वी गेट द रेड सॉइल ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा with reference to landforms of arid region which of the following is not a correct statements kona wind is the most effective agent of erosion transportation and deposition in the arid region okay mechanical weathering is more visible in arid region in comparison to chemical weathering then Zeugen and Yardans are erosional landforms in desert region. Playa Lake has low percentage of salt. Answer करो 5 seconds नियो ओके आंसर होपफुली कर दिथियो 5 सेकंड रो बहुत अधिक हो गेला नाउ लेट्स डिस्कस तो एरिड रीजन माने कोन जोठी मॉइस्चर कंटेंट कम रहइबो मॉइस्चर कंटेंट कम रहिले सेठी रेनफॉल बेसी हबनी डेजर्ट रीजन फॉर एग्जांपल डेजर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एरिड रीजन तो से जगह रे आमे पाइबानी रेन वाटर देन आउ कोन पाइबानी आमे ग्लेशियर पाइबानी तमे नोटिस करथिबो समर रे जेताले विंड ब्लो करूची सब धूली इजीली उड़ी जाउछ ना तो सेम जिंस ही हमर एरिड रीजन रे थ्रू आउट द ईयर होची तो यस दिस इज करेक्ट विंड इज द मोस्ट इफेक्टिव देखो रेनफॉल हेले सेठी भी इरोजन हबो
बट इट इज नॉट दैट मच रेनफॉल से अधिक हुए आम तो ग्लेशियर पाइबानी भी एंड जदि आम वेव्स को भी देखा वेव्स दे आर नॉट लाइक कोस्टल रीजन इंटरनल रीजन में तो हबनी सेटा राइट सो wind is the most effective one so this statement is correct हमको पचार not correct ठीक है then mechanical weathering versus chemical weathering in the arid region now chemical weathering na different types कौन solution carbonation hydration hydrolysis oxidation reduction right these are the different types except oxidation reduction बाकी सबुरे water रूल अछि कोन सॉल्यूशन आमे जो सॉल्यूशन बनाउचे पानी रे चीनी मिसै देले सॉल्ट मिसै देले सेही सॉल्यूशन बनला तो सिमिलर कांसेप्ट होची सॉल्यूशन वेदरिंग कार्बोनेशन रे कोन होची कार्बोनेशन रे एसिड रेन विषय रे तो सुनिथिबो नाउ हमरो एटमॉस्फेयर रे कार्बन डाइऑक्साइड अछि कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर मिसले गोटे एसिड बने सेटा होची कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक एसिड टा गोटे वीक एसिड जोटा कि एते लो पीएच नुह तारा बट स्टिल इट इज एन एसिड वीक एसिड हेले किछि तो इंपैक्ट करिवो तो सेटा वेदरिंग करे रॉक रे सेटा को हम कहूचे कार्बोनेशन एठी भी वाटर रो रूल रहला रेनफॉल रो देन हाइड्रेशन पानी इमेजिन करो रॉक सहित एटा होची जे आमे जतले बाहरे वर्षा दिन रे गोटे पट्टा खाली रे छाड़ देले से पट्टाटा पानी पी की फुली जाउची तो सेही जिंसटा जतले रॉक सहित होबे सेटा को आमे कहूचे हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस कोन वाटर रो केमिकल सिंबल कोन जहाँ भी कहती H2O तो H2O टा हाइड्रोलिसिस हेले H प्लस OH माइनस रे कन्वर्ट हुए एंड देन रॉक रे किछि गोटे मिनरल H प्लस सहित रिएक्ट करी कि भांगी जीवो OH माइनस सहित आउ किछि रिएक्ट करी कि से भी बाहर जीवो दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस वाटर टा H प्लस OH माइनस है कि केमिकल रिएक्शन करछि रॉक रो डिफरेंट कंपाउंड सहित ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन रो रोल एठी अछि ओके आयरन ऑक्सीडेशन है कि रस्ट बनी जाए राइट तो सेटा होची ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिडक्शन जेतबळे रस्ट रु आमे जदी ऑक्सीजन काढी परिया देन इट विल रिटर्न बैक टू आयरन दैट इज रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीजन ऐड हेले ऑक्सीडेशन रिमूव हेले रिडक्शन तो केमिकल वेदरिंग रे अधिक पानी दरकार एरिड रीजन रे सेटा नाही सो ऑब्वियसली मैकेनिकल वेदरिंग विल prevail over the chemical weathering so a statement ta bhi correct achi then Zeugen and Yardangs को ना कहलेनी सर नहीं so Zeugen and Yardang did a arid region ro landfall okay तो एठी कौन हुए এটা সফট 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 এটা হচ্ছে হার্ড 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 ওকে নাও सो दीटा टाइप रो अरेंजमेंट हे परियो हॉरिजॉन्टल ही के अरेंज हे परियो हार्ड और सॉफ्ट रॉक ओके देखो रॉक भी डिफरेंट टाइप रो हार्डनेस रहता है हार्ड रॉक हे परियो सॉफ्ट रॉक हे परियो चॉक चॉक टाको तमे एमती हाथ रे मंथि देले चॉक गुंड होई जिवो
बट तमे सीमेंट टाकू सेमती गुंड कर परिबनी हार्ड एंड सीमेंट आमे जो कंक्रीट बनउछे गोड़ी तो जमा ही कर परिबनी बजुरी गोड़ी जोडा कहूछे सेटा होची हार्ड सेही टाइप रो डिफरेंट लेवल ऑफ हार्डनेस रो डिफरेंट टाइप्स रो रॉक थाए तो सेटा आइदर हॉरिजॉन्टली अरेंज हे पारे नले वर्टिकली अरेंज हे पारे लाइक इन फिगर 1 हॉरिजॉन्टली और फिगर 2 जोटा कि वर्टिकल अरेंजमेंट हिची तो एठी कोन हुए विंड एक्शन टा बेसी रहबो विंड कोन करियो बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स उड़े कि नबो निज सहित ओके से जो सैंड पार्टिकल कंटिन्यूअसली आमे ए पेन टा को धरिकी एठी की कंटिन्यूअसली बारंबार मारिबा मु कंटिन्यूअसली डे आफ्टर डे एमती मारिबी तो एई जगह रे गोटे होल क्रिएट हे जीवनी बारंबार से जगह रे इंपैक्ट हला तो एठी गोटे डैमेज हो डिस्प्ले फाटी जीवो देन मु पुणी आउरी करी वर्ष वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष जाय करथुबी बसी के ठीक देन एटा पूरा होल हे से पुटको पळेबो तो सिमिलरली डेजर्ट रीजन में कहूँ विंड सैंड पार्टिकल्स उड़े की आने एंड सेगुरा का आसिकी एठी हिट करंती बट हार्ड रॉक बीइंग हार्ड रॉक ता ऊपर बेसी किछि इंपैक्ट पड़ेनी इंपैक्ट पड़े सॉफ्ट रॉक ऊपर तो को गोटे पॉइंट रे गोटे छोटो क्रैक रे पसी गला सैंड पार्टिकल माड़ कर देला सेटा उटिके लूज कर देला आउटिके लूज कर देला ओवर द टाइम कोन होबो ना ए पार्ट गुरा का भांगी गला एठी सॉफ्ट रॉक रो इरोजन हिची दिस विल लीड टू the creation of something like this ओके तो कौन हम देखो ब्रिज कथा भाव ब्रिज रो तले सपोर्ट रहउची सपोर्ट गोटे भांगी गला कौन हम ब्रिज कोलैप्स कर जीवो तो सिमिलरली सॉफ्ट रॉक टा इरोजन होउची बट हार्ड रॉक टा सेमती अछि हार्ड रॉक रो इरोजन होउची बट सॉफ्ट रॉक रो इरोजन ही कि कोन हला हार्ड रॉक तळु सपोर्ट उठी गला हार्ड रॉक टा डेंस रहिबो डेंस अधिक रहले तार वेट अधिक रहबो तो तळे जदी किछि सपोर्ट न रहिबो से कोन हबो भांगी जीवो तो भांगी की एमती गोटे लैंडफॉर्म क्रिएट करियो एंड दिस इज नोन एज जुगेन्स ए केस रे कोन हबो हमर एठी विंड टा एमिति माड होउची तो एबे इमेजिन करो कोन करिया ना मैं एटा को इरेज कर दो ओके तो एबे इमेजिन करो कि एटा एमती अछि पेडेस्टल भलिया ओके 3D डायग्राम ओके तो एबे इमेजिन करो कि विंड टा एई फेस रे आसी कि माड होउची एई फेस रे ओके एमिति माडले सॉफ्ट रॉक टा ही रोड हबो हार्ड रॉक की रोड हबनी सॉफ्ट रॉक की रोड ही जीवो हार्ड रॉक की रोड हबनी सॉफ्ट रॉक की रोड ही जीवो हार्ड हबनी तो कोन हबो तो only hard rock will remain soft rock ro
रेमिनेंट एमती तले टिके रहि जिवो खाली एटी टिके टिके हेकि रहि जिवो ओके तार हाइट कमी जिवो एंड दिस इज नोन एज यार्डान्स ओके पूरा लंबा लंबा लाइन ऑफ हार्ड रॉक्स ता तले किछि नै साइड रे किछि नै बट इन केस ऑफ जुजेन्स सेठी कोन हबो हार्ड रॉक ता ऊपर अछि ता तले एमती सॉफ्ट रॉक रो गोटे पूरा लेयर अछि गोटे पूरा कोन कहि पारो बेस अछि ओके नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन सो हम देखले स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि जुजेन्स एंड यार्डान्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स इरोजन है कि सेटा बनछु डिपोजिशन तो होउनी नुआ लैंड क्रिएट होउनी पुराना लैंड तक भांगी जाउची डिसइंटीग्रेट हो जाउची इरोड हो जाउची सो एटा आल्सो करेक्ट सो आवर आंसर विल बी दिस प्लाया लेक हैज लो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट जोटा कि रॉन्ग तो प्लाया लेक कोन कहउचे प्लाया लेक होची मन देखो डेजर्ट रीजन रे वर्षा केबे ना केबे तो हुए एमिति नुए जे वर्षा सारा केबे भी वर्षा हुए एंड जेतले वर्षा हबो को गोटे डिप्रेशन में जाएंगी पानी टाइम जे जमी जिवो बट जेहेतु एटमॉस्फेयर रे मॉइस्चर बेसी नाही तो कोन हम इवापोरेशन ही जिवो डेजर्ट रीजन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट रॉक मानकर भांगी की सैंड सहित मिसी की अछि पानी रे सेटा डिसॉल्व हे के आसी गला ए जगह रे डिपॉजिट हे गला वाटर इवापोरेट हे गला कोन छाडी की पळेला सॉल्ट एठी रहि जिवो सॉल्ट पार्टिकल ता तळे एंड दिस जो रेमिनेंट रोची सॉल्ट पैन भलिया सेटा को हमें कहूचे प्लाया लेक एंड सेठी हमर कोन सॉल्ट अधिक रोची कम नुह सो आंसर विल बी दिस द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची क्वेश्चन होची आईटीसीजेड ऊपर विथ रेफरेंस टू द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन consider the following statements it is a low pressure zone located at the equator where trade winds converge okay in winter the ITCZs move northward and so the reversal of winds from south and southwest to northeast takes place which of the following statements is correct above statements not following answer go ओके सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नाउ ओके अर्थ अर्थ रो एटा हला इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल एंड एटा होची नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री साउथ 90 डिग्री नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ 22.5 डिग्री नॉर्थ 67 एटा 22.5 डिग्री नॉर्थ 60 sorry this is south एटा होची 22.5 डिग्री साउथ 67.5 डिग्री साउथ एटा होची आर्कटिक सर्कल कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा होची इक्वेटर एटा होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एटा होची अंटार्कटिक सर्कल ओके नाउ प्लानेटरी विंड सिस्टम विषय तो जानि थिबो प्लानेटरी विंड शब्द आमे नबा सूरज चाचा को ठीक अछि ओके सन रहिला सन रेज असला राइट एति तो जाना थिबो ट्रॉपिक्स मझिरे सन at least once a year stays
exactly overhead, right? 90 degree insolation हुए. Now because of this कौन होगा ट्रॉप देखो ए जो इक्वेटोरियल रीजन टा सेठी बहुत अधिक इनसोलेशन हुए बहुत अधिक टेम्परेचर अधिक रुहे इनसोलेशन नो टेम्परेचर बहुत अधिक रुहे तो टेम्परेचर अधिक रहिले कौन हम विंड राइज करिवो एमती गरम हम ऊपर को उठिवो हॉट विंड हॉट वाटर एनीथिंग एनी हॉट फ्लूइड इट राइजेस अप ओके तो ऊपर को उठी की कौन हम किछि बाट परे एमती तळकु जिवो ए रीजन टा जो हैला एटा हमर कोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखापाखी रीजन टा 20 डिग्री 30 डिग्री पाखापाखी रहइबो एटा देन 30 रु तळकु जो आसुची सेटा छाड़ दवा एबे आमे जिबा पोल रीजन कोल्ड रीजन तो कोल्ड एयर कोन हबो तळकु आसीबो तो तळकु आसीले एठु कोन हबो बाहर को जिवो बाहर को गले एठी ऊपर को उठिबो पुनी वापस आसीबो तो ए साइकिल टा एम्ति चलथिबो एटा को आमे कहूचे प्लैनेटरी विंड सिस्टम हैडली सेल फेरेल सेल पोलर सेल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज पोलर ईस्टर्लीज राइट सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज देन पोलर ईस्टर्लीज ठीक अछि तो सेटा होची हमरो प्लैनेटरी विंड सिस्टम तो ए जो रीजन टा कहूची एटा होची हमरो ITCZ ओके सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि जो पॉइंट रे बोथ ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करचंती सेटा को हमें कहूचे ITCZ नाउ विथ अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन कोन हबो सन रा अपेरेंट पोजीशन टा ए रीजन भितरे हमरो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भितरे मूव करिवो एमती अप डाउन हुए एवरी ईयर तो जेतबेले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे समर हबो सेतबेले कोन हबो ना सन विल बी डायरेक्टली ओवरहेड अराउंड दिस रीजन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन एंड सेही पॉइंट पर्यंत हमरो ITCZ टा शिफ्ट हे जिवो ता सहित आउ गोटे फैक्टर हमको कंसीडर करियार अछि अर्थ रो रोटेशन जोगु गोटे फोर्स क्रिएट हुए सेटा को हमें कहचे कोरियोलिस फोर्स एंड से कोरियोलिस फोर्स जोगु हम जदी एटा को अगेन मु अर्थ कर दउ जे ओके तो कोरियोलिस फोर्स जोगु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे गोट जदी ऑब्जेक्ट एमिति जिबा चेष्टा करछि सेमित न जागी इट विल टर्न टुवर्ड्स इट्स राइट ओके तो एपट को जदी ए डायरेक्शन आसो इट विल गो लाइक दिस सेथि पई हमर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रो डायरेक्शन टा एमिति अछि से एमिति आसे चेष्टा करछि बट ए एमिति बुली के पड़ोछि ओके सिमिलरली साउथ ईस्टर्ली से माने सीधा जीवा चाहउछंती बट नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर रे कहबो दे विल टर्न टू द लेफ्ट तो एमिति जीवा चेष्टा करछंती किंतु एमिति बुली गले बट ए विंड टा जतबेले इक्वेटर असला इक्वेटर को क्रॉस करके जीवो कोन पई ना हमर ITCZ टा घुंची जाइछि तो इक्वेटर को क्रॉस करी गला परे से एमिति जो जातो पुनी तापर डाहाण को बुलियो चाहिबो डाहाण को बुली की हमर को डायरेक्शन रे जाउछि साउथ वेस्ट रु जाउछि तो हमें सेटा कोन कहबा साउथ वेस्ट मानसून विषय रे पढिछ जो माने तो माने एटा को रिलेट कर परथो मानसून विंड टा सेही मेकानिज्म फॉलो करके ही जाउछि ओके नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन It is a low pressure zone located at the equator where trade winds converge. Correct. In winter, ITCZ moves northward. नहीं तो winter रे northward जाए ना summer रे जाए. So this is incorrect. आरंभରୁ ही जानी गले. तो south west टा north east होएगी. भूल कहला. South आमे जो south रु आमे साउथ ईस्ट रु जाउचे एमिति ए डायरेक्शन जाउचे मु एमिति जाउची बट साउथ ईस्ट चेंज ही कहि जाउची साउथ वेस्ट ड्यूरिंग समर जेतोले ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जाउची इन केस ऑफ विंटर कोन होची ITCZ ता तळु को आस जिवो हमर को डायरेक्शन आस जिवो सदर्न हेमिस्फीयर को आस जिवो सदर्न हेमिस्फीयर को आसला बेले कोन होबो ना जो ट्रेड विंड्स आसुची सेटा नॉर्थ ईस्ट रु ही आसीबो
ओके सेटा नॉर्थ ईस्ट मानसून जोटा कहूचे से मेकानिज्म टा जोटा कि विंटर सीजन रे हुए सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हमको पचाची करेक्ट कोटा सो आंसर विल बी 1 ओनली ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ता पूर्वरु लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट द प्रीलिम्स योर शॉर्ट बैच ठीक अछि जोटा कि हमरा एबे अपकमिंग प्रीलिम्स ପାଇଁ 2025 एग्जाम रो जो पोस्ट बाहर छी 400 प्लस पोस्ट 450 प्लस सेटा ପାଇଁ हमरो स्टार्ट होची एंड याद रे बहुत जण भलो भलो फैकल्टी तुमको पढेबे एंड conceptual clarity दिया होगा this will be for namesake a crash course the only thing that is making this a crash course is the speed because जल्दी जल्दी हमको सारे अछि प्रीलिम्स ପାଇଁ बेसी टाइम नहीं आते राइट तो जल्दी जल्दी हमको सारे अछि तो स्पीड अधिक रहबो पाठ कम रहबो ठीक अछि तो एटा को जब जॉइन करियर अछि कॉल द नंबर मु स्टार्टिंग रु कहथि 977 646 4टा 2 ठीक अछि जो माने जॉइन करिया को चाहूछो नंबर ता नोट कर देगी कॉल करिकी कथा ही परियो ना आगु को जिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन arrange the following gases in decreasing order of their share in the atmosphere first is carbon dioxide oxygen hydrogen argon okay तो कौन होबो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पिला वाला क्वेश्चन एथे डिस्कशन करिया रे किछि नाही सबुटू अधिक हमरो एटमॉस्फेयर रे कोन छी नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन फॉलोड बाय आर्गन फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हमरो वेरियस अदर कंपोनेंट्स जो थरे की हाइड्रोजन भी आसुची ओके तो फर्स्ट चारटा तुमको मन रखियार अछि दैट इज कंपलसरी तो सेही ऑर्डर हम जानि होले ऑक्सीजन फर्स्ट रहइबो तो 2 ऑप्शन सी एलिमिनेट हे गेला आउ डी एलिमिनेट हे ओके ऑप्शन सी हमरा एलिमिनेट हे गेला फर्स्ट 2 रहइबो देन ऑक्सीजन परे हमें कोन पाउचे आर्गन 4 2 परे 4 गोटिए रे अछि आंसर बाहरी गला ऑप्शन बी ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आउ किछि टाइम क्वेश्चन रहला मात्र तुम मनकर शीतदनर निद मु नष्ट कर दूची जल्दी जल्दी सार दबा consider the following statements block mountains often result from rifting and faulting fold mountains are created where two or more of earth's tectonic plates are pushed together due to tension induced forces a horst represents a block pushed upwards relative to the blocks on the either side of the faulting now plate tectonics okay tensional force लगिला टाणी हबो रिप हे गेला कि a part of the crust subsides or compression force रहिला a part of the crust lifts एमिति सिचुएशन टाकू हमें कहिबा ब्लॉक माउंटेन क्रिएशन जेतळे अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो एंड ए जो अपलिफ्टेड पार्ट टाकू सेटा को हमें कहूचे हॉर्स्ट एंड एटा को कहूचे ग्राबेन सो स्टेटमेंट 1 आउट 3 करेक्ट अछि बट 4 रे एटा ऊपर नोटिस करो एटा कंप्रेशन होबा दरकार फोल्ड माउंटेन को होची कंप्रेशन होची प्लेट एमती रहला कंप्रेशन हेले एटा एमती फोल्ड हला ठीक अछि त कंप्रेशन फोर्स दरकार बाकी सब ठीक अछि बस सेठी गोटी पॉइंट गोटी वर्ड रे ही आंसर स्टेटमेंट भूल गेला सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3 देन नेक्स्ट क्वेश्चन This landform is characterized by dry vegetation, free, flat bottom depression at the lowest part of a desert basin. It is periodically covered by water that slowly filtrates into the groundwater system or evaporates into the atmosphere. एटा हमें डिस्कस करथिले आंसर तमे दबाउ चेष्टा करो 5 सेकंड्स टाइम देली देन मु संग संग आंसर ही कहबी आगु बढ़ी
ओके सो द आंसर विल बी प्लाया ओके प्लाया लेक जोटा आमे देखथिले सेटा होची तार डिस्क्रिप्शन टा होची एटी दिया हिची ओके डेफिनेशन कहि पारो डिस्क्रिप्शन कहि पारो जहां भी देन नेक्स्ट क्वेश्चन with the statement with reference to magma consider the following statements viscosity of the magma that erupts from a volcano affects the shape of the volcano okay viscosity shape को affect करे okay basaltic magma is high in iron and magnesium lava that is extruded onto the surface during a volcanic eruption is called magma now take 5 seconds ओके सो फर्स्ट विस्कोसिटी माने कोन केते इजीली सेटा फ्लो करछि केते माने केते डिफिकल्टी ताकू फेस करियो पड़छि रेजिस्टेंस केते मिलुछि फ्लूइड को जब हमें खाली पानी नेले पानी टाको एमते ढाल देले इजीली फ्लो कर जिवो बट पानी जगह रे लेट्स टेक बाडिया डालमा जानती हो बाडिया डालमा राइट बाडिया डालमा टा फ्लो करेनी बिकॉज़ तारा विस्कोसिटी हाई राइट तो जेतो लावार विस्कोसिटी अधिक रहबो से फ्लो कर परिबोनी लावा टाइम ती बाहरला फ्लो करियो चेष्टा करी बेसी बाटा जाई नथियो सॉलिडिफाई हे जो कूल डाउन हे जो बाहर को आसला माने तार टेंपरेचर कमियो लागिवो एंड कूल डाउन हे जो जल्दी सॉलिडिफाई हे जो तो स्लो सेटा कोन हबो गोटे स्टीप एंगल रो वोल्केनिक माउंटेन क्रिएट करिवो बट जदी विस्कोसिटी अधिक थिवो विस्कोसिटी कम थिवो इट विल फ्लो इजीली एंड फ्लो कला परे the mountain will not be sharp it will be flat okay shield volcano जोड़ा कोचे सेटा बनियो तो this affects the shape of the volcano correct basaltic magma is high in iron and magnesium this is also correct now एठी कोन हिची magma और lava रो पोजीशन टा चेंज हिची magma interior of the earth रे थिला magma कोचे surface को आसले lava hi जाउछ so this is incorrect answer हबो 1 and 2 option C okay then last question with reference to the continental shelf consider the following statements these are part of the oceanic crust it is broad where mountains are away from the coast and narrow where the mountains are nearer to the coast continental shelves comprise half of the total ocean bottom the region is characterized by unstable water conditions answer को 5 seconds ने ओके हमो का विषय पचार कॉन्टिनेंटल शेल्फ फर्स्ट स्टेटमेंट रे कोन कोची पार्ट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट किछि न जानथिले भी वी कैन मार्क दिस एज रॉन्ग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंट रो सेल्फ कॉन्टिनेंट रो थाको ओशन रो पार्ट किमते हो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन इट इज ब्रॉड वेयर द माउंटेन्स आर अवे फ्रॉम द कोस्ट तो एडा हला कोस्ट ओके ब्लू कोडे वाला एडा होची ओशन पार्ट तो कोस्ट पाखरे जदी हमें माउंटेन देखिबा सेडा रे देखो फोल्डिंग हेथियो सेथि पई कोस्ट पाखरे माउंटेन बनिची एंड फोल्डिंग हेले जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ टा एमिति थिला सेडा भी फोल्ड हेथियो ना नै सेटा भी छोटो हो जाइथियो तो कोस्ट पाखरे जदी माउंटेन अछि कॉन्टिनेंटल शेल्फ विल बिकम नैरो जदी नाही देन सेटी फोल्डिंग हेनी सेटी किछि प्लेट मार्जिन नाही कन्वर्जेंस हेनी देन से केस रे चौड़ा रह ठीक अछि सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट continental shelves comprise half of the total ocean bottom this is actually wrong continental shelf ता ocean bottom रो half केमति हो continent देखो एई पाखे रे ही continental shelf ता बनिबो just ocean आउ continent रो margin जो बीच पाखे रे जोडा हमें कोचे सेही रीजन रे ही continental shelf ता बनिबो तो this is incorrect statement 3 is incorrect so statement 4 को जिबा the region is characterized by unstable water conditions waves water ta stable no calm water no hame waves dekhuche so this is correct answer will be option statement 2 and 4 are correct option D okay so that's it for today baki next hame next class में दिखावा thank you good night